Basically very interesting case, post-op case. ये इंजीनियर साहब है, इसका इंजरी हुआ था 6 months बैक और इसकी राइट नी में मल्टी लिगामेंटस इंजरी थी, यानी इसका इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट रप्चर हुआ था, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यानी पीसीएल इसका रप्चर हुआ था, इसके साथ साथ मीडियल कोलैटरल लिगामेंट एमसीएल रप्चर हुआ था और साथ इसकी लेटरल मेनिस्कस टियर था। हमने ऑर्थोस्कोपिक रिकंस्ट्रक्शन की, ACL को रिकंस्ट्रक्ट किया, PCL को रिकंस्ट्रक्ट किया, मेनिस्कस रिपेयर किया और MCL को इंटरनल ब्रेस थी उसको फिक्स किया। So the patient is just 6 months down the line after arthroscopic reconstruction of the right knee multiligamentous injury. Look at this, all the scar mark has been healed. पर आप बिल्कुल इंजीनियर से excellent, शाबाश। So the range of motion is complete. Palaga Bentley, please. 90 punch. Shabash. Shabash. So look at the pen test. PCL is intact. Pen test is negative. I'm checking the draw test. Look at this for the ACL and look at this for the PCL. Intact, and the MCL is completely okay and the patient is doing well. So the patient is walk is completely normal and there is no limp.